recording. Okay. As far as today's class is concerned, देखो okay. Noises to be eliminated. Now see. हमारा क्लासेस जो कमेंस हबो हमें जून 2021 रो जून 2022 this entire 1 year current affairs we are going to cover. Now how this we are going to cover? Every Saturday or Sunday, say let us say one Saturday, जो हमें से जून मासर कवर करवा जून 2021. So here we will be giving you some PDF. At least around 80 questions will be there. A questions PDF जो मैं आपन को शेयर अप करबी एटार ऑलरेडी आगो दे देबी so that you take a print out. एथरे 80 questions discuss करू करू हमर around approximately you can say 200 questions we will be discussing. But today is our first class, so we will be dealing with some special type of current affairs. We will be dealing with Albin, mute karo or else I will remove you. Okay. In today's class, today is the first class, so we will be going through. Today is the first class, so we will be doing some specific current affairs. We will see that what could be the expected question with respect to recent coronavirus. Corona related, what are the recent updates we have? What kind of questions can come? The second individual we will see some special operations of India, various major operations. Kon India take over Karich. The third is about Odisha. Odisha related, what are the recent current affairs which are attached to Odisha in the last 7 to 8 months? In the fourth way, we will see our world number one or world's largest or world's biggest, which is present in India. And India first, for example, India first biopark, India first gender park, India first iron ore policy, India सबुठु बड़ solar power train कोठी चलला, India highest railway station किंबा world highest railway station. So India रे जोटा first time हेची एबे ए year रे or world first जोटा जोटा हम India रे अछि. So that is the recent attachment of current affairs. Everything I will share you the PDF. आपण मानकर गोटिए काम just to listen carefully. Just to listen carefully, everything will be provided to you. Now see, related to corona, किछि आपण rough paper रखिथिबे, किछि note down टिके करि परिबे, no problem. Related to corona. First of all, गोटे PM cares fund खोला गला. Exam रे आपण को PM cares रो full form पछरी पारे. All over India रे entire vaccination program जो cover up हबो या में केते कोटी खर्च होची 900 कोटी. And a 900 कोटी जो आसीबो पैसा एटा को फंड रो आसीबो, it will come from the PM cares fund. India is trying its best to provide, आमे भी चाहूँ छे आमे भी neighboring countries हो कि अलगा other countries हो, एमन को हमें vaccine पहुंचेवा. So that mechanism or that mission is known as vaccine Maitri. India wants to help its neighboring or nearby countries. Vaccine हमें अलगा countries को भी पठौछे. That is called vaccine Maitri. आमे जो टीका नेले दी प्रकार टीका हमें देखिले. One is called Covaxin. आ गोटे आमे देखिले Covishield. Friends, जहाँ मो कहूची खाली सुनंतु, टिके टिके नोट करंतु. Everything PDF I will be giving you shortly. Your only work is to understand. आमे ए दीटा टीका देखिलु आमो इंडिया रे बहुत चलना. These are in India made. Covaxin is prepared by Biotech, Bharat Biotech. And Covishield आमे जानिचे Serum Institute of Technology. So
भुवनेश्वर रे जो माने रहउथिले पर्टिकुलरली कोवैक्सिन नहीं थिबे बट ऑल ओवर ओडिसा रे एक्सेप्ट भुवनेश्वर सब जगह रे हमर कोविशील्ड दैट मींस ऑल ओवर इंडिया रे कोविशील्ड रो प्रेजेंस बहुत अधिका थिला तो आमे कहि परिबा कि हम इंडिया रे बहुत लोकन को जीवन बंचेया पई कोविशील्ड टीका ही हमें बहुत लोक सारा नहीं छ ऑल ओवर इंडिया रे अराउंड 80% लोक कोविशील्ड नहीं छंती त माने जे कोविशील्ड तयारी करिछि ही मस्ट बी रिवार्डेड विथ समथिंग तो कोविशील्ड रो जे तयारी करिसंती he has recently received India's national award of Lokmanya Tilak award that is called Lokmanya Tilak award एटा काहाकु मिलिछि सीरस पुनावाला CYRS सीरस पुनावाला तो ऑप्शन रे ता पुओ ना भी थिबो अधर पुनावाला सो बी वेरी कॉशियस सीरस पुनावाला ओके सो ए दिटा वैक्सीन रशिया रो वैक्सीन जो एटा हम जानि छे स्पुटनिक फी 5 कोरोना चलला बेले किछि गोटे एमती डिजीज आसिला हमको ब्लैक फंगस टाइप सो a famous disease a name came up as black fungus तो एग्जाम में पचारि पारे ये ब्लैक फंगस रा आउ गोटे ना कोन ये ब्लैक फंगस रा आउ गोटे ना होची mucormycosis okay so black fungus is also known as mucormycosis and mucormycosis hele केवल गोटिए ड्रग अछि जोटा के एटा का ट्रीटमेंट करि परिबो that is called amphotericin b right amphotericin b तो black fungus को mucormycosis भी कहूचे which will be cured what is the drug used to cure this mucormycosis that is amphotericin b हमको कोरोना हेची कि न हेची तो कोरोना डिटेक्शन पे हमें कौन करथिले फर्स्ट टाइम में रैपिड एंटीजन टेस्ट करथिले फुल फॉर्म भी पचारि पारे देन वी हैव प्रोसीडेड टू RT-PCR टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फ्रेंड्स यार फुल फॉर्म भी देखि नेबे पचारि पारिबो बट अनदर वेरी पिक्युलर टाइप ऑफ मेकानिज्म which is designed by DRDO एटा बहुत वर्ल्ड फेमस भी हे गला सो DRDO कोन कला ना गोटे लोकर छातीर एक्सरे को स्कैन करा हबो एक्सरे रिपोर्ट को गोटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट भितरे पूरा हबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय वेज ऑफ मींस रे by using that x-ray report the output can be produced that whether you are corona positive or negative and this robot name is known as atman artificial intelligence so world रे प्रथम थर पई x-ray report भी positive ki negative jani haba and this has become world famous but who has designed this atman artificial intelligence it is designed by India and then DRDO जेतले आपण टीका नउथिले कोरोना वैक्सीन टीका नउथिले देखिथिबे डॉक्टर आपण कहथिबो टिके 10-15 मिनिट बस राइट बट काहे की बस ना जदी कार रिएक्शन करि जिवो ब्लड क्लॉटिंग हे गेला सो दैट ब्लड क्लॉटिंग इवेंट if you'll get blood clotting after injecting COVID tika, that blood clotting event is known as thromboembiosis. So eta gote what asthila news re ki thromboembiosis is related to which of the following? It is related to vaccination or blood clotting during vaccination. किछि लोक कोवैक्सीन नेले किछि लोक कोविशील्ड नउथिले ऑब्वियसली आमे तो पढ़ा लिखा आमे जदी कोवैक्सीन नहीं छे विल कंटिन्यू विथ दिस बट उत्तर प्रदेश रे इमती हला किछि लोक कोवैक्सीन नहीं गले और सेकंड डोज कोविशील्ड नहीं गले तो कोन आउटपुट हबो तो काले से माने मरि जिवे बोली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज वेट बट देखिला कि 4-5 मास होइलानी मरु नहंती सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट कला कि कोवैक्सीन नहीं थिबो पुनी कोविशील्ड भी नबो दीटा जको मिसे कि नेले भी लोक बंचु जंती इट्स बेटर इम्यूनिटी सो ए जो मिसे कि टीका नेले सो दिस हैज गिवन बर्थ टू ए न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग एंड मैचिंग so what is the question friends mixing and matching recently seen in news is related to what is related to COVID vaccination mixing and matching is related to COVID vaccination आमे मनुष्य को ही केवल कोरोना नहीं एनिमल्स मान को भी होची तो एनिमल्स मान को जो कोविड हैला एनिमल्स मान को पे टीका भी बाहरिला आ वर्ल्ड रो प्रथम टीका फॉर एनिमल्स इज given by Russia a world रो प्रथम टीका ता ना होची कार्निवैक so remember
the first tika for animals COVID designed by Russia. आउ एबे कोन हेची हमें तो टीका नोचे बट टीका परे कोन आसला इज देयर एनी टैबलेट इज देयर एनी ड्रग yes world pratham drug designed by European nations the medicine which can be taken to cure this COVID that is baricitinib तो ए ड्रग टा होची वर्ल्ड रो प्रथम ड्रग जो थरे की कोविड ट्रीटमेंट भी हेई पारुची आ एटा वर्ल्ड रो प्रथम ड्रग फॉर कोविड बट जदि क्वेश्चन हमको आसे हम इंडिया रा प्रथम ड्रग कोटा जोटा की इंडिजिनियस फॉर कोविड टीका टीका न ने कि हमें जो ड्रग खाइबा सो इंडिया रा इंडिजिनियस इट्स नेम इज विनकोव 19 एवरीथिंग आई विल गिव इन विद इन 2 minutes we just need to stay focused कि को जिंस कोठो इंटरलिंक होची जहां भी हमरा पैंडेमिक हैला आ नियर फ्यूचर रे हम जहां भी हमरा हां कोन कहू छै ऐसे मैं कोशिश कि एगडा में नोट डाउन कर देबे ना अपन यार रिकॉर्डिंग ता एटा फर्स्ट क्लास था खाली सुनि नियंतु जस्ट 2-3 minutes वेट करंतु अपन को मु दोची नोट्स ओके विनकोवैब पैंडेमिक ट्रीटी ए जो कोरोना पैंडेमिक हैला आउ नियर फ्यूचर रे आउ एटलीस्ट इमिति पैंडेमिक है कि इमति लोको हैरान न होंतो सो व्हाट इज द प्रोसेस हाउ टू स्टॉप दिस फ्यूचर पैंडेमिक को हमको बंचेबा को अछि सो दिस कांसेप्ट इज नोन एज पैंडेमिक ट्रीटी तो क्वेश्चन आपन को पड़ी पारे कि पैंडेमिक ट्रीटी हैज बीन डिजाइन्ड बाय हुम सो द बिगेस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जतले कोरोना पैंडेमिक हैला in America if you see this America this is North America but here this is USA रे around गोटे दिन रे 50,000 लोक resign कर देले so that became a big blunder in the history and that is designed as the great resignation the question पड़िबो कि the great resignation is related to what is related to which country or mass resignation of which country around 50,000 people have quit the job okay ए जो corona word अछि corona the word what is the meaning of this corona in coronavirus the coronavirus जो कहू छै एथरे corona word रो meaning कोन ना it is a spike so what kind of spike it is a crown like spike 2020 2021 2022 every year हमर गोटे word of the year बाहरे right तो 2020 रो word of the year was pandemic 21 word of the year was vax and 22 the word of the year was grow एतिक जिंस related to this coronavirus so now I will share with you see हमें जहा कहलु एठी मु लेखिची so in short you can visualize anyone can say yes sir or no sir is the screen visible हाँ sir Yes, sir. यस Okay. सर यस सर ठीक अछि तो we are enough matured कि हमें टिके टिके पॉइंट रो हमें बुझी परिबा so I hope कहारो किछि डाउट रहले they can ping me up later on but हमें जहा भी बुलेटेड पॉइंट्स उडा डिस्कस करि छे just 2 minutes रे मोथरे रिवाइज कर दउ छे वैक्सीन मैत्री इंडिया बाहर वैक्सीन दबो एटा होची दीटा टीका हमें नै थिले आ कोविशील्ड को जे तयारी करथिला ताकू लोकमान्य तिलक अवार्ड मिलला ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाए आ या को ट्रीट करिया पई दिस इज द मेडिसिन डिटेक्शन पई हमरो तीनटा प्रोसेस अछि ब्लड क्लॉटिंग को हमें थ्रोम्बोएनोसिस कहूचे एनिमल पई कार्निवैक आ वर्ल्ड र प्रथम ड्रग हे गेला this one our indigenous drug is the name is this pandemic treaty future preparedness of such pandemic designed by WHO the great resignation a news टा कोठू आसेला 50,000 resign कले there is a word called deltatron आगा में ओमिक्रॉन देखिले अगर में डेल्टा थिला तापरे ओमिक्रॉन आसिला एबे फोर्थ वेव रे ए दीटा मिसी की आछी सो डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन मिसी की ना पड़ी गला डेल्टाट्रॉन इंडिया रा प्रथम स्टेट जे की 100% डोज पूरा कंप्लीट करला स्पीड रे
first dose Telangana, and similarly first city je complete kala it is Odisha. And ए तीनटा point तो मु कहली. So ए जति की सब point को हैला friends, ए जति की सब point को हैला, just apna you will go with a revision once or twice, then it is okay for you. Okay, so I hope this first page is okay with you. If it is okay, shall we proceed to the next point? हाँ सर. सर गोटे क्वेश्चन अच्छे. हाँ. सर जो 100% जो कंप्लीट करबे स्टेट ता तेलंगाना और सिटी ओडिशा कोन भुवनेश्वर ओडिशा रो. सिटी भुवनेश्वर. प्रथम स्टेट जे कि 100% प्रथम डोज देला सेटा तेलंगाना. आ प्रथम सिटी जोटा कि एटा एते स्पीड अचीव कला हम ओडिशा रे बहुत घाई घाई चलथिला. से तो फेक डेटा माने मोर के घरे सर नै नहंती डोज जणे तो भुवनेश्वर 100% केमती हिला मु मन तो फेक तो छु. मु कोन नवीन को धरी पचारिबी से जहा अछि न हैला. हो से तो जहा डाटा को नै कि हमें वी विल प्रोसीड ना. कोन तम ना? सर दीपिका. दीपिका कोन पूरा कोन तो आई विल कंप्लेन टू WHO. दीपिका भौमिक. दीपिका भूमिक. ठीक अछि. Okay, let's proceed. Okay, now देखंतु. There are some recent operations, various major important operations. तो को ऑपरेशन को नाटा कोन हमको बुझौछि. ऑपरेशन देवी शक्ति. ये जो देवी शक्ति ऑपरेशन इज व्हाट? अफगानिस्तान रे जो तालिबान टेक ओवर करी गला तो अफगानिस्तान रे जो हम इंडियंस माने अछंती, we have to bring them to India safely. So this operation is done by Indian Air Force aeroplane. So Indian Air Force launched this operation Devi Shakti. Afghanistan लोक मान को इंडिया को आनिबे. So now you can tell me कि ए जो यूक्रेन रे जो अटैक हैला, यूक्रेन रे जो स्ट्रैंडेड इंडियंस थिले हमें तांको भी इंडिया को आनिबा. So what operation was given the name? Operation Ganga. Operation Ganga. Okay. ठीक अछि. ऑपरेशन बंदर मांकड़ भलिया डें डें कि हमें बदला नेलु. हमर जो बालाकोट स्ट्राइक हेइथिला माने बालाकोट स्ट्राइक रो बदला में नेलु. आ सेठी टेररिस्ट जो माने लुचि कि थिले पाकिस्तान ने हम जाय कि बॉम्बिंग करथिलु. सो इंडियन एयर फोर्स एरोप्लेन ने जाय कि बॉम्बिंग करथिले. सो दैट ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन बंदर. ऑपरेशन ओलिवा. ओलिवा रिलेटेड टू ओलिव रेडली टर्टल्स. ओलिव रेडली टर्टल्स. वर्ल्ड रे जदी टर्टल्स सबुठो अधिका कोठी अछंती दैट इज इन इंडिया. इंडिया रे कोठी अछंती ओडिशा. ओडिशा रे कोठी अछंती दैट इज टू बी इन गहिरमाता. गहिरमाता. तो एठी आहुरी से टर्टल्स माने आहुरी किंदी प्रोटेक्टेड होन तो आहुरी मास नेस्टिंग हो, आहुरी पॉपुलेशन बढ़ू. सो इंडियन कोस्ट गार्ड हैज टेकन दैट लीडरशिप. तो ऑपरेशन ओलिवा इज स्पेशली लॉन्च्ड इन ओडिशा टू प्रोटेक्ट रेड लीफ टर्टल्स. ऑपरेशन वंदे भारत मिशन. वंदे भारत मिशन कोन ना एटा गोटे बहुत बड़ मिशन. चलो भारत वापस चलो. ऑल ओवर वर्ल्ड रे जेतले पैंडेमिक चली थिला आ इंडिया रे लॉकडाउन कंडीशन हेथिला तो सेतले ऑल ओवर वर्ल्ड रु हम इंडियंस लोक जो माने फसी थिले द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज टेकन ए लीडरशिप कि हमें बाहर इंडियंस जो माने स्ट्रैंडेड हे चंती तांको आनिबा. तो गल्फ कंट्रीज रे तो आनी परिबा बट सी रूट रू भी हमें आनिया पे चेष्टा करछु. सी रूट रू इंडियन नेवी आनिबो. तो इंडियन नेवी जो आणुथिला दैट ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन समुद्र सेतु. इंडियन नेवी बाहर कंट्रीज रे जो इंडियंस ट्रक्ड अप हे जायथिले ड्यूरिंग लॉकडाउन टू ब्रिंग देम सेफली टू इंडिया. दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु. एठी दीटा ऑपरेशन देखंतु. ऑपरेशन सुदर्शन एंड ऑपरेशन शरद हवा. So a data operation, both these operations are launched by BSF Border Security Force. Difference कोन? सुदर्शन कहूची कि हम इंडिया रे जो टेररिस्ट पाकिस्तान माने पसुचंती they are entering through Punjab and this Jammu. So particularly Jammu and Punjab रे हमें we have to do the cross check and stop the infiltration. So जेते भी टेररिस्ट जम्मू आउ पंजाब पटो पसुचंदी तांको रखिवा पे that operation carried out by BSF is Sudarshan. And how this operation Sarad Hawa कि if you'll see that in biggest desert, the biggest desert in India, Thar desert, Rajasthan रे बेले बेले जो लू भलिया पवन चले
लू भलिया पवन आसी गोटे पहाड़ हे जीवो राइट सो ए लू भलिया पवन रे भी किछि टेररिस्ट माने अछंती एक्सपीरियंस जो माने पळे असंती सो टू स्टॉप द टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन इन Rajasthan that is called Operation Sarad Hawa. Next ए दीटा देखंतु ऑपरेशन को जीत एंड नमस्ते ए दीटा इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी केमती एथरे स्पेसिफाइड करूची को जीत कोरोना ऊपर जीतिबा हमें केमती जीतिबा ना इफ वी कैन प्रोवाइड सफिशिएंट बेड इफ वी कैन प्रोवाइड सफिशिएंट डॉक्टर्स सब वाडे बेड भी शॉर्टेज हला डॉक्टर्स भी शॉर्टेज हले सो इंडियन आर्मी कहला हमें तमे हमरो सिविलियंस माने कैन आल्सो यूटिलाइज द इंडियन आर्मी हॉस्पिटल एंड बेड्स सो कोरोना ऊपर जीत ऑपरेशन नमस्ते इज ए डायलॉग लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी कि आउ शेक हैंड न करी कि वी विल कंटिन्यू विथ दिस नमस्ते प्रोसेस टू स्टे अवे फ्रॉम दिस इन्फेक्शन ऑपरेशन पर्वा ए जो 2021 रे चेन्नई रे फ्लड आसिला तो चेन्नई रे एयरपोर्ट भीतर भी पानी पसी गला सेतळे तांग मुंडरे चेता बसिला एंड देन दे हैव डिसाइडेड द इंडियन एयर फोर्स हैव डिसाइडेड दैट दे हैव टू रेस्क्यू दिस एंटायर चेन्नई फ्रॉम दिस फ्लड so the flood victims will get relief so entire chennai re flooding event ko rokhiya pe air force attempt naitla that event is known as operation parva operation insaniyat what does it say insaniyat mane gote humanitarian assistance so what does this humanitarian assistance do ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶ ସେପଟେ ଅଛି ଏ ବାଂଲାଦେଶ को जो रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार रो बहुत जोरे इन्फिल्ट्रेशन हेगला बांग्लादेश वाज इन सडन शॉक and how Bangladesh could able to protect these people or help these people that humanitarian assistance physical aid medical assistance everything was provided by India so this operation by Indian army is known as operation insaniyat the whole world appreciated it okay so these are the list of the operations we have recently seen and operation devi shakti very important operation ganga आपण जानले गंगा यूक्रेन रो आनिवा देवी शक्ति अफगानिस्तान रो लोकों को आनिवा ऑल ओवर इंडिया रे लॉकडाउन ने फसी थिवा लोकों को आनिया पे ऑपरेशन वंदे भारत सर जो मिशन सागर टा जो अछि हाँ मिशन सागर अच्छी तो ओके मिशन सागर समुद्र माने कोविड वैक्सीनेशंस इंडिया तार नेबरिंग कंट्रीज रे समुद्र रे जो कंट्रीज अछंती आसियान मेंबर्स हो कि सार्क एसोसिएशन हो एमन को नेबरिंग कंट्रीज को कोविड वैक्सीनेशन सप्लाई करिवो थ्रू समुद्र जहाज सो दिस इज नोन एज ऑपरेशन मिशन सागर ओके थैंक यू गोटे छाडी देथली ओके नेक्स्ट ए पोर्टल रे देखिबे यूजीसी अछि ओके आ टिके तळगु आसीबो लेट अस सी दिस अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स एटा भी हमरो एग्जाम रे पढी जाय डायरेक्टली समर ओलंपिक्स 2024 एटा पेरिस रे हबो 28 लॉस एंजलिस 32 टा ऑस्ट्रेलिया सेमती विंटर ओलंपिक्स 2022 चाइना रे आ 2026 इटली रे हबो तो एबे हमरो बर्निंग क्वेश्चन एथरे कोन आछी देखंतु फ्रेंड्स ए जो विंटर ओलंपिक्स बेजिंग चाइना रे हबा को जाउची एथरे दीटा क्वेश्चन ए जो चाइना रे हबा को जाउची तो को देशटा निजे बहिष्कृत हो गला माने बॉयकॉट कर देला आ को देश को एमाने रिजेक्ट कर देले सो ऑब्वियसली चाइना रे होची माने यूएसए हैज टेकन ए बॉयकॉट सो व्हिच कंट्री हैज बॉयकॉट हिमसेल्फ फ्रॉम द विंटर ओलंपिक्स इट इज यूएसए आ को देश को एमाने रिमूव कर देले नॉर्थ कोरिया आंसर इज नॉर्थ कोरिया सो बाकी अपकमिंग स्पोर्ट्स को इवेंट कोटी हबो एटा मो डिटेल्स गोटे शॉर्ट रे लिखि देछि इफ यू विल सी दिस क्रिकेट इंफॉर्मेशन आल्सो ओके हमरो 2023 इंडिया रे वर्ल्ड कप हबो फुटबॉल सॉरी क्रिकेट 2023 हमरो ये भी हबो हॉकी वर्ल्ड कप भी हबो मेंस टी20 2022 ऑस्ट्रेलिया रे हबो 2023 इंडिया रे हबो वुमेन्स टी20 साउथ अफ्रीका सो बेले बेले स्पोर्ट्स रो पड़ी जाय को इवेंट कोटी हुए एटा फुटबॉल रो वर्ल्ड कप अछि जोटा कि 2022 रे बे कतर रे हबो आ वुमेन मानकर 2023 रे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सो जस्ट यू विल हैव ए लुक टू हियर एटी थरे गोटे एती की गोटे लुक कर देबे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स बेसिकली ओलंपिक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल ए तीनटा रो हमरो मैक्सिमम गोटे क्वेश्चन पड़ी जाय एठी हमें किछि देखिबा यूजीसी हैज अप्रूव्ड सम ऑफ द स्कीम्स तो दीक्षा आरंभ स्कीम ये कौन करुची ना जो स्टूडेंट्स माने फर्स्ट ईयर रे एनरोल होचंती
जो भी इंस्टीट्यूट हो ऑर्गेनाइजेशन हो कि कॉलेज हो फर्स्ट ईयर रे से बहुत डर रे थांती फर्स्ट ईयर रे से को जहाँ भी टैलेंट अच्छी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट तो से रैगिंग रो भय थाए टैलेंट रो हंटिंग हेई पारेनी तो यूजीसी कहूँ कि जो भी पिलार टैलेंट अच्छी से वेबसाइट को जाइए टैलेंट पर्दाफाश करें सो नो नीड टू गो एंड टेंशन पिला मन सहित कथा हवा दरकार नहीं जदि भयभीत लगुच सो जिते भी रैगिंग रू बंचिया इवेंट्स अच्छे और तुम जो टैलेंट अच्छे सेटा तमे तुमको वेबसाइट रे निज कॉलेज रे वेबसाइट रे तमे मेंशन करि परिबो दैट इज कॉल्ड दीक्षा स्ट्राइड स्ट्राइड कौन ना आमर इंडिया रे बेसी रिसर्च होनी बिकॉज पीएचडी रे बहुत कम पैसा मिलुची आम इंडिया लोक बाहर को पळौचंती टैलेंट ब्रेन ड्रेन हो जाउची सो आमे चाहूचे कि आम इंडिया रे भी अधिकांश आग पीएचडी करूथिले 15,000 मिलुथिला बट एबे नाउ पीएचडी करले आपन को 35,000 मिलिबो देखो स्टाइपेंड भी पैसा बढ़िला सो पीपल विल स्टे हियर पीपल विल प्रमोट द रिसर्च इंडिया रे रिसर्च आहुरी पिला माने पाठर एजुकेशन रे करंतु that scheme is known as a stride scheme next जदि को गोटे इंस्टीट्यूट अच्छी I1 suppose there is an IIT and a institute IIT to किछि benefit नबा को चाहूची so this institute will request the UGC कि UGC हमको ये IIT रो किछि help दरकार so directly IITs रो याको help मिली परिबो so that is called paramers so for the betterment of the functionality of any institute the UGC will give paramers to other IITs to help the needy institutes Urkund software it's a very important software जते भी IITs किंबा IIM पिला प्रोजेक्ट सबमिट करूचंती आमे हमर बीटेक एमटेक की तमरो बीएससी फीसे प्रोजेक्ट सबमिट कले कोन करूचो ना हेते पर हमें कॉपी पेस्ट करूचे तो कॉपी पेस्ट इज ए क्राइम दैट इज नोन एज प्लैगियरिज्म फॉरेन रे प्लैगियरिज्म इज अ वेरी हीनियस क्राइम इट इज मोर देन ए रेप तो तमे कहार आइडिया कॉपी करि परिबो नाही जदि तमे कहार आइडिया कॉपी करछो गोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे गोटे इंडिया रा आईआईटी पिलाटे दोची पीएचडी पाइबो पीएचडी जदि हेई गेला तारो सी लखे 1.5 लाख दरमा पाइबो केते गाइड करिवो सो तारा आइडिया ओरिजिनल थिबा दरकार तो सी जेबे भी प्रोजेक्ट सबमिट करिवो से प्रोजेक्ट रो थेसिस रिपोर्ट टा सॉफ्टवेयर भितरे पसिबो एटलीस्ट 5% प्लैगियरिज्म इज अलाउड तो 5% acceptable तो जदि सेरा कॉपी पेस्ट नथिबो then he or she will be rewarded with the degree so actually पिलाटा कॉपी करिछि कि नै plagiarism software that is called Urkund software एजुकेशन रिसर्च कला बेले किछि पिला माने आइडिया दरकार हेल्प दरकार तो से माने कोन करिवे किछि डाटा किछि स्टोर हाउस रु किछि पेपर्स डाउनलोड करिवे मोर XYZ ऊपर आइडिया नहीं तो मु आउ किछि एक्स्ट्रा पेपर पढिले आइडिया हो तो जते भी सब रिसर्च मैनुअल पेपर इंडिया रो सब रिसर्च मैनुअल इज स्टोर्ड इन द केयर पोर्टल कहा को रिलेटेड भी रिसर्च करिवार अछि केयर पोर्टल भितरु तमे पेपर डाउनलोड करिकी आइडिया नहीं परिबो एंड देन यू कैन प्रोसीड सो दिस इज अबाउट दिस यूजीसी गाइडलाइंस तो ये पेपर रे देखिबा हमें देखिले फर्स्ट पेज रे अपन कोरोना स्पेसिफिक किछि इंफॉर्मेशन देखिले there are some recent operations we have seen UGC's upcoming sports events next ए जो जिनसोडा देखुचंती इंडिया रा प्रथम where and by whom okay so all these answers I have written so eta last 6-7 months ro सब choose करी करी क्वेश्चन सुडा करा हिची so just you have to go through a revision for example okay now see question number 9 India's first water plus city तो water plus city the answer is Indore तो इटा कोन water plus city माने not that water is rich एते neat and clean city रे water is not going in wastage water रो wastage होनी water को properly utilize करा होची water रो importance हमने जानिले so everywhere very neat and clean the cleanest city of India Indore एटा को हमें water plus city कहूची जदि आपन क्वेश्चन आसे in India which is the first city to get drink from tap water facility drink from tap को इंडिया रो को it is Puri excellent drink from tap facilities Puri okay
So like that सब जगह जिनस एथरे गोटे ये रे अछि देखंतो एटा भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 if you will see आम इंडिया रो आई माने इंडिया रो फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज हमर जो नेशनल हाईवे अछि एबे इंडिया रो को नेशनल हाईवे रे जदी इमरजेंसी हैला फ्लाइट भी लैंड करि परिबो सो फॉर इंडियन एयरफोर्स नेशनल हाईवे 925A बारमेर इज इन राजस्थान सो किछि एनएच रो एबे नेम्स भी चेंज हेछि सेटा भी हमें अपकमिंग इवेंट्स रे पढिबा ओके फॉर एग्जांपल हमरो previous data कहउथला NH7 from Varanasi to Kanyakumari was the longest but now it is not more longest ए वाराणसी रो आउटी को उठाया जाय छै श्रीनगर so Srinagar to Kanyakumari is now India's longest NH which is abbreviated as NH44 okay तो एमटी भी ऐसे परे कि longest NH44 is also known as the north south corridor north through south corridor so this is about NH even amaro जयदेव जो NH जाइछि amar जो Chennai you can say Chennai to Kolkata earlier it was NH5 but it has been renamed to NH16 okay so that way you can remember so a very important question that one so like that many things are there so only India first koti kono a last 6-7 month ro it just apanung thare revise karibar achi so there's nothing to discuss just you have to go for a revision इंडिया रो प्रथम ड्राइवरलेस ट्रेन आ एटा तमे सांग मानक भितरे गोट थरो 2-3 थरो डिस्कस कर देले यू विल हैव ए नोट इंडिया रो प्रथम ड्राइवरलेस ट्रेन ऑब्वियसली दिल्ली मेट्रो आई विल सी क्वेश्चन नंबर 36 इंडिया रो फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात इंडिया रे अधिक लिथियम रिफाइनरी कोठी लिथियम बैटरी को लिथियम कोठी मिले गुजरात आ यार गोटे अपडेटेड क्वेश्चन कोन ना वर्ल्ड रो एबे को देश तार कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करला so there is a country in the continent South America there is a country called Chile Chile जहाँ भी कहि परे तो Chile the constitution को rewrite करिछि काई करछि what is the reason is world रो second largest lithium रहुछि चिली रे चिली बेचारा बढ़िया देशटे जदि लिथियम आयन पई लिथियम बैटरी हम यूज करछे लिथियम रिफाइनरी रो हम लिथियम उठे दबा सॉइल बिकम मॉइस्चर एंड इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट एंटायर लिथियम एंटायर पूरा जो लिथियम बिजनेस पई लिथियम ए जो चिली अछि पूरा हॉटेस्ट क्लाइमेट हे जिवो सो पीपल चाहुचंदी कि हमर लिथियम व्यापार दरकार नै हमें बंचिवा दरकार सो पीपल हैव स्टॉप्ड रीराइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि आउथर कॉन्स्टिट्यूशन लिखाओ तमे माइनिंग करि परियोनी so set of good peoples are also there so that this type of questions also we will cover in short while biggest 38 question देखो तो biggest hockey stadium हम इंडिया रे is राउरकेला कौन अछि थरे थरे इथरे पढिबार अछि फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी बढ़िया इंटरेस्टिंग थिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें कार दे के बुली जाउछे गवर्नमेंट रो व्हीकल रे किंतु हॉट एयर बैलून नै जिमती इंडी बैलून थिबो सेठी इंडी बस थिबो ए बैलून टा पूरा गोटे मुंडो से मुंडो जीवो विथ प्रॉपर कंट्रोल सो दैट इज कॉल्ड हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश रो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व okay first seaplane service it is in Kevadia this question is also equal to this question number India first electric vehicle city India's first electric vehicle city ये जो question गला हमरो if you'll see in the state of Gujarat Narmada Nadi जो जाउची there is a city called Kevadia now in this Kevadia city जेते भी सब 17 टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर देयर तो जोठी भी आपण बुलिया को जिवे एठी की जिवे सो यू हैव टू गो बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल आ एठी जो नदी रे अछि एठी सी भी प्लेन अछि प्लेन रे भी टिकट बुक करले आपण हाइड्रो पावर वे रे जिवे तो एंटायर सिटी रे टूरिस्ट अट्रैक्शन बुलिवा पई एवरीथिंग इज डिजिटल एवरीथिंग इज इलेक्ट्रिक व्हीकल सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉड्यूलेशन पई आम इंडिया रा प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी हैज बिकम केवाडिया सिटी तो केवाडिया सिटी हमर कोठी अछि इट इज इन द गुजरात केवाडिया सिटी गुजरात ओके केवाडिया सिटी वेरी गुड इज इन गुजरात क्वेश्चन 32 देखो गोटे मिनट सर क्वेश्चन नंबर गोटे मिनट क्वेश्चन नंबर 23 द फर्स्ट सिटी इंडिया रा प्रथम सिटी टू बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी टिके गोटे मिनट वेट करंतु
ऑल ओवर इंडिया रे 2030 ପରେ ଆଉ पेट्रोल किंबा डीजल गाड़ी बिक्री हबो नाही. So that project of India is known as E2030 initiative. That project is known as you can note down these 3 points. That project is known as E2030 initiative. It means no more petrol or diesel vehicles will be covered. We will be shifting towards electric vehicles. So question रे initiative रे तीनिटा initiative थिबो तो देखंतो आउ कोन initiative अछि गोटे होछि E2025 initiative. E2025 initiative रा purpose कोन that by 2025 20 countries have agreed to eradicate malaria. So this initiative is about to eradicate malaria. Malaria eradication, that is called E2025 initiative. E2030 initiative, promotion of electric vehicles. Similarly, jodi question padibo E2070 initiative is related to what? कि 2070 सुधा हमर टारगेट है जीवो कि नेट जीरो कार्बन एमिशन. Net zero carbon emission. This recently Modi has announced in a global meeting of environment climate change. Today is a good day of World Environment Day. Electric vehicles जो चलिबो एरा नंबर प्लेट को कलर obviously green. इंडिया रे अधिकांश जिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल आहुरी आसु बहुत स्पीड रे इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमें स्विच करिबा. So that scheme is known as the FAME scheme. So if question comes that FAME scheme is related to what? Is related to electric vehicle, faster adoption and mechanization of electric vehicles. को गोटे क्वेश्चन ने कहउथिले सर? Sir, 32 question. Sky Park जोटा. हाँ, स्काई पार्क माने स्काई माने कोन देखंतो आकाश. जेमदे आकाश ऊपर गोटे पार्किंग हुए. माने एबे हिमाचल प्रदेश रे टूरिज्म हमें जीवा हमें सपोज एटा हाईएस्ट पॉइंट को गले एठी पार्किंग गले याठु भी जदी ऊपर हमें पार्किंग करि परछे दैट बिकम्स ए हाईएस्ट पार्किंग. सो इट इज नाउ डिक्लेयर्ड एज ए फर्स्ट स्काई पार्क. माने सबटु अल्टीमेट हाई पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश रे पार्किंग भी करि परिबे आ सेठु आहुरी भलो भलो हिमालय सीन्स भी देखि परिबे कुफ्री. So that is in Himachal. It is bracket रे लिखा है छि increase tourism, that means to promote the tourism. Okay, एटा होछि हमर किछि अपडेट वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स. एटा भी आपण मन देखिबे. एटा लास्ट 6-7 मंथ्स रो बहुत रिसेंट रखा है छि जेंति जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट. सो एटा को रीनेम करा हेला रामगंगा नेशनल पार्क. इफ यू विल सी दिस सर जो अपन अबे कहले जो नेट जीरो कार्बन एमिशन को से मतलब कोनोसी भी जिंस जोटा कि कार्बन एमिशन कराए से भले जिंस इंडिया रे रहिबनी. सबु इलेक्ट्रिक व्हीकल हे जिवो, सोलर पावर्ड हे जिवो. सो कोनोसी भी जिंस इंडस्ट्रीज भी होबनी. बुझि परलो? यस सर. 2070 सेट दैट इज कॉल्ड 2070 को सेति के दूर टारगेट अछि. डोंट वरी आमे के पहुंची नथिबा. एटा स्कीम रे अछि. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. तो देखंतु हमर क्वेश्चन पड़े कि हमर इंडिया रो फर्स्ट नेशनल पार्क आगा हम सुनुथिले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. क्वेश्चन ए भी आछि कि एटा केबे हेथिला 1936. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज हेली नेशनल पार्क. तो एटा हमर स्टैटिक एक्टिविटीज थिला. तबे करंट अफेयर्स रे कोन कोछि जिम कॉर्बेट रे ना चेंज ही कोन हेला रामगंगा नेशनल पार्क. बिकॉज़ इफ यू विल सी दिस गंगा रिवर एठी एमती गोटे रामगंगा नदी टे जाए. ए रामगंगा नदी पाखरे जिम कॉर्बेट अछि. तो एतमे ता नारे पडु बोली लोक उत्तराखंड रे. So that's why the name is changed to Ramganga National Park. Okay, Jim Corbett National Park renamed to Ramganga National Park. Like that. Eta भी गोटे important question देखो. Fifth, world रो सबटो highest motorable road माने इंडिया रो हाईएस्ट रोड को अपन जो बाइक ट्रैवल करके जानती लेह टू पैंगोंग लेक. एटा आउट के तळु थिला, लेह रु तळु थिला, बट एबे आउट के बढ़ी गला. क्वेश्चन जदी आसीबो को पास, देन यू कैन से उमलिंगला पास. तो इंडिया रो सबटो हाईएस्ट रोड रे जोठी हमें मोटर व्हीकल चले परिबा, दैट इज क्वेश्चन इज हाईएस्ट मोटरेबल रोड. द आंसर इज लद्दाख. राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क व्हिच इज इन असम is been renamed as बेचारा राजीव गांधी नाडो काटी देले and it become a question for us. Medicines from the sky. See question number 17. Medicine from sky. आकाशरो मेडिसिन पडिबो माने कोन हमें मेडिसिन अर्जेंटली
ऑर्डर कले तेलंगाना स्टेट रे ड्रोन्स रु भी मेडिसिन डिलीवर हे परिबो. So that is called medicines from sky. So ki eta launch karchi in the state of Telangana. World highest electric vehicle charging station built in which state? The kind of question kain gela kana Himachal Pradesh highest level ro upar state re au taathu upar ko hai ni, so it becomes world's highest at an elevation of very high electric vehicle charging station in Himachal Pradesh. Faster electric scheme, faster electric system certificates eta ebe kiye introduce kala? Faster Supreme Court of India. Very important question. Faster kono ना जदि सपोज को लोक को न्याय मिलला सकाळ 9टा बेले तार रिहाई हैला सी एते खुशी जाउची, खुशी हे कि आउ का कोन गोटे कांड करी पुनी आउथरे जेल रे पसी जाउची. तो सुप्रीम कोर्ट कहूची कि बेचारा जदि गोटे लोक को 10टा बेले रिहाई करिवार ऑर्डर आसिला ताकू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दियो जिमसी विद इन 5 मिनिट्स जेल बाहर थिबो, नो सेलिब्रेशंस नथिंग. So that scheme is called faster scheme. So faster scheme implemented by Supreme Court of India. Amara javelin throw re Neeraj Chopra amara jitila gold medal. So 7th August is celebrated as National Javelin Throw Day. Okay. Like that. It's about direct question अच्छी. So question answer भी लिखा है. So थोड़े आपण पढ़ी के एटा को रिकवर करि परिबे. Project O2 oxygen. Project O2 for India. What is the purpose? हम all over India रे जेतले कोरोना पैंडेमिक रे हमरे सब छाती रे धक धक है कि निश्वास नहीं पालनु मरि गलु, तो हेत पे हमको ऑक्सीजन बहुत दरकार हैला. ऑक्सीजन शॉर्टेज को मीट करिया पे हमर इंडियन रेलवेज ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लगेला. सो दिस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन रो पर्पस कोन ना एटा ऑक्सीजन सिलिंडर्स कैरी करी के जीवो. सो फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन कोटु खोजा जायथिला, एटा जायथिला मुंबई टू विशाखापट्टनम. फर्स्ट ऑक्सीजन ट्रेन मुंबई टू विशाखापट्टनम. So like that ए सब जिंस अच्छी देखंतु एटा को हमें क्वेश्चन नंबर 28 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड और ट्री कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हैदराबाद कहूचे बिकॉज सिटी एक्सपैंड हेले ट्रीज कट हुए. In Hyderabad, it is opposite. Everywhere you will see there is a plantation drive going on. So entire Hyderabad, they are planning by 2030 to cover with trees. Pura entire, pura greenery kar debe. They will create another forest in the Hyderabad city. Despite of city expanding, they will create a forest. Okay, so ये question ओडा अपना मने थरे थरे revise कर देबे. It's up to you. थरे दि तीन थरो संग मने सहित revise कर देले, it will be easier. So this I will मुंबई को ट्री सिटी को आ जायथला ना अभी रिसेंटली. कोटा ट्री सिटी को city नहीं मुंबई को नहीं. Tree capital of world is your tree capital of world is Hyderabad. Just a minute. Okay. Now, एटा हमरो ओडिसा रो मो वॉइस सुबुची ठीक ठाक. Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ओके थैंक यू. ए पोर्शन टा हमरो ओडिसा रो किछि रिसेंट अपडेट्स हमें देखिबा. ओडिसा रे जो करंट अफेयर्स हमें सब पढु जे से थ्रू ओडिसा पे जो जो जिंसोड आछि सेटा शॉर्ट लिस्ट करी के लेखा आछि. ओके, तो हमें टिके देखि दबा. देखंतु एटी सब लेखा आछि, जस्ट अपन सुनी दियंतु. दिस पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ यू शॉर्टली. आम इंडिया रो सॉरी हमर ओडिसा रो प्रथम आईआईएम कोटी खोलिछि आईआईएम संबलपुर. इंडिया रो फर्स्ट फायर पार्क ए जो निया फिया लागी गले केमती बुझेबो एटा पे तुमको जदी ज्ञान दरकार तमे भुवनेश्वर रे फायर पार्क अछि सेठी ऑपरेट कर परिया. बिकॉज़ आज भी हमें कोडी ऑफिस रे थिबा कोडी निया लागी गले फायर एक्सटिंग्विशर हमें लगिया सिखिने. सो देयर यू कैन गो एंड लर्न. कोरोना रे जो माने सब फ्रंट वर्कर्स माने काम करूथिले, वर्कर्स माने कोन डॉक्टर्स थिले, नर्सेस थिले, पुलिस स्टाफ जते भी सब गवर्नमेंट ऑफिशियल फोर फ्रंट रे मरि गले सेमान को पे गोटे वार मेमोरियल तयारी हला. दैट इज कॉल्ड कोविड वार मेमोरियल. सो इंडिया रो प्रथम कोविड वार मेमोरियल दैट इज आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन भुवनेश्वर. हमरो हमें तो बहुत बात्या हमर तो बहुत साइक्लोन आसे. तो साइक्लोन आसिले आगामी दिन रे किमती कोन हमें तको प्रिवेंटिव मेजर्स नबा ये सब इन डिटेल्स आइडिया. सो दैट इज कॉल्ड इंडिया रो प्रथम थंडरबोल्ट रिसर्च सेंटर.
that is located in Baleswar. Thunderbolt Research Center to stop the further cyclonic interference and influences. World रो प्रथम स्किल सेंटर माने जते भी रूरल वुमेन माने अरे टिके म्यूट कर दियो मैडम. वर्ल्ड रो फर्स्ट स्किल सेंटर दैट इज आल्सो इन ओडिशा. तो रूरल वुमेन मानकर अपलिफ्टमेंट पई तांकर जहाँ भी स्किल्स अछि किए भलो बुणे किए भलो फिता काटे को लेडी भलो चाष करे तो जहार जो स्किल्स अछि रूरल वुमेन एम्पावरमेंट पई सो सबुठ बिगेस्ट इज इन ओडिशा दैट इज वर्ल्ड्स प्रथम स्किल सेंटर. ओडिशा रे भुवनेश्वर इन गंडमुंडा यू कैन हैव ए वॉच. इंडिया प्रथम सिटी होची भुवनेश्वर जी की एफएसएसएम सर्विसेस रे ताको रिवार्ड मिलला. एफएसएसएम सर्विसेस रो फुल फॉर्म देखिबे फेकल स्लज सेप्टेज मैनेजमेंट. बट क्वेश्चन कोन आसे इंडिया रो प्रथम सिटी जहा को ई सर्विसेस रे अवार्ड मिलला कि रिवार्ड मिलला माने जते भी नळा नळा छोट नळा हेई बड़ नळा नदी नदी समुद्र माने अल्टीमेटली एंटायर भुवनेश्वर सिटीज रे जते भी ड्रेनेज चोक है कि से मैला आमे चाहुने जस्ट अ मिनिट टिके गोटे मिनिट सॉरी. टिके गोटे मिनिट. ओके चिन्मय मु लिंक दे दीजिए यू कैन ज्वाइन. राइट हाँ देखंदो इंडिया रो प्रथम सिटी एफएसएसएम सर्विसेज ए जो छोट नळा रो जो आवर्जना होची सेटा में नळा लेवल रे ही सफा कर दबा. वी विल हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. वी आर नॉट गोइंग टू पॉल्यूट द रिवर पॉल्यूट न हेले हमर एट लास्ट हमर फाइनली हमर समुद्र भी पॉल्यूट हबनी. सो दैट सफा सुतर मेकानिज्म इज कॉल्ड एफएसएसएम सर्विसेज. रादर हमें से जो मैला आवर्जना वाला बाहरीबा से वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट मटेरियल को हमें किछ रिसाइकल करिकी आमे किछ नुआ कंस्ट्रक्ट करि परिबा. सो दैट बिकम्स अनदर क्वेश्चन कि इंडिया रो प्रथम वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्सन प्लांट कोठी अछि भुवनेश्वर रे अछि. तो जहां भी हमरा आवर्जना इस वेस्ट बाहरला ताको हमें किंतु एनर्जी कन्वर्सन प्लांट रे लगे कि किछ गोटे प्रोडक्टिव वे रे यूटिलाइज करि परिबे. सो दीज आर सम ऑफ द India's first like this events are mentioned. असंतु नेक्स्ट को जीवा. हमरो गोटे स्कीम अछि एक भारत श्रेष्ठ भारत. इथरे इमोशनली इकोनॉमिकली फाइनेंशियली और कल्चरली एवरी अदर स्टेट वांट्स टू कोरिलेट. जेम इथरे देखिबे कि ओडिशा और महाराष्ट्र जदि एमनक रिलीजियस बिलीफ्स एंड कल्चरल व्यू शेयर करिवे सो ओडिशा रो किछि शॉर्टेज हेले कि ओडिशा रो किछि नीड हेले महाराष्ट्र विल हेल्प और महाराष्ट्र रो किछि प्रॉब्लम हेले ओडिशा विल हेल्प लाइक पोटैटो ओनियन ट्रांसपोर्टेशन. सो एक भारत श्रेष्ठ भारत पई ओडिशा को स्टेट से तो टाई अप करिछि. वी हैव टाइड अप विथ महाराष्ट्र स्टेट. सो मेन पर्पस कोन कल्चरल हेरिटेज एक्सचेंज ऑब्वियसली. तो किछि रिलीजियस बिलीव्स कल्चरल रिलीजियस हेले हमें आउटिके प्रोग्रेस भी हे परिबो. सो एनीवे Odisha has tied up with Maharashtra for Ek Bharat Shrestha Bharat. Mo छतुआ माने छतुआ नियो घरे खाई की निज राशन कार्ड स्कीम that is called mo छतुआ. mo शिशु अभियान जो भी नुआ छुआ जन्म होची से छुआ जदि तांको माँ बापा इलिटरेट कि से छुआ को केतेटा टीका दिया हबो
को टाइम रे को टीका दिया हबो तो एंटायर टीका वैक्सीनेशन प्रोग्राम ऑफ ए नुआ छुआ इज नोन एज मो शिशु अभियान छुआ जन्म हेले गोटे गवर्नमेंट तरफ गोटे एनरोल कले गोटे बही दिया हुए से सब डेट लिखा हुए को डेट रे को टीका दिया हबो फॉर 2 इयर्स ए टीकाकरण चले एक्चुअली 2 इयर्स पर्यंत गवर्नमेंट रे लक्षे टंका लागे टीका एटा गवर्नमेंट रो फ्री एक्चुअली छुआ माने 16 वर्ष जाए टीका नवा कथा 2 वर्ष जाए गवर्नमेंट दोची फ्री आ बाकी लोक दौना बिकज गवर्नमेंट रे पैसा आ सेटा टीका नहीं तो किछि लोक प्राइवेट रे भी दियंती धनी लोक माने प्राइवेट रे भी दियंती अदरवाइज 2 इयर्स पर्यंत सब टीका इज फ्री फॉर गवर्नमेंट ममता प्रोग्राम ममता माने सर अफेक्शन जो ये मो जो समथिंग এটা কোন লেখা আছে सर जो एंटर जो वैक्सीनेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी जोटा मो शिशु अभियान सेटा सर ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे ना बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल रे एप्लीकेबल प्राइवेट रे तमरो 300 टाइप रो टीका थिवो गवर्नमेंट रे तमरो 70 टाइप्स ऑफ टीका ए 70 टा फ्री आ बाकी पैसा पड़िबो प्राइवेट रे जाय परिबो छुआटे जन्म हेले तुमको गवर्नमेंट रे ना लिखिया को पड़िबो जेमती ना लिखेबो अंगनवाड़ी रो तुम गोटे कार्ड मिलिबो से कार्ड रे सब वैक्सीनेशन शेड्यूल थिवो सो दैट इज नोन एज मो शिशु अभियान ओके यस सर ममता प्रोग्राम और जदि प्राइवेट रे छुआ जन्म होला से प्राइवेट रे हेले भी से छुआ रो डिटेल्स आधार कार्ड बाहरिया पे गवर्नमेंट एनरोल को जीवो तो गवर्नमेंट तरफ तुमको कार्ड मिलिबो प्राइवेट रो भी कार्ड मिलिबो प्राइवेट वाला भी पैसा नेबे ओके ममता प्रोग्राम गोटे गरीब लोकों पई जतोले छुआ बहुत कष्ट रे जन्म है तो 5000 टंका तंको मिले फर्स्ट रे से माने दे हैव टू डिक्लेयर दे आर प्रेग्नेंट डिलीवरी परे आ छुआर प्रथम टीका तो ए तीनटा फेज बाय फेज तंको पैसा मिले सो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन को 5000 रुपीस मिले सो दैट इज कवर्ड इन ममता प्रोग्राम कोरोना पैंडेमिक रे जो बापा मरीगला छुआर कि माँ मरीगला कि बोथ मरीगले सो ए स्कीम रे आम ओडिशा पिला मान को 2500 टंका पर मंथ मिलिबो एज स्टाइपेंड दिस योजना इज नोन एज आशीर्वाद योजना ओके सो ओडिशा रे बापा माँ की बोथ किंबा वन और बोथ पेरेंट जदि कोरोना रे डेथ हेचने 2500 पाइबे किंतु इंडिया रो स्कीम कोन कहूची ना पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन बोली गोटे अछि जदि गोटे छुआर बापा माँ मरी जाइछन्ती ताको एबे पैसा मिलिबनी 18 वर्ष पर जदि से बंची थिबो सो गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग देम अराउंड 15 lakhs so that 15 lakh will come from pm cares for children but after age 18 किंतु ओडिसा रे संगे संगे आपन को मास को 2500 भत्ता मिली जीवो आकांक्षा योजना पर्टिकुलरली एसटी गर्ल्स मानकर हॉस्टल अकोमोडेशन भलो हेले एसटी गर्ल्स माने पढ़ी पारिबे बहुत इंटीरियर ट्राइबल्स एरियाज रे हमर ट्राइबल स्कूल्स मास एंड एजुकेशन रहउची जोठी कि पिला थरे पाठ पढ़ी आसिले सेकंड डे कष्ट लागुच बोली पढ़ी आसुनांती तो एसटी पर्टिकुलरली एसटी गर्ल्स माने तांको तांको पे जदी हॉस्टल सुविधा करा हबो समान को रखा हबो रखाइले पढ़ाइले समान देशर मंगल करिवे न पढ़िले कोड होबो तो पढ़िवे केंती न हॉस्टल हेले ही तांको रखी की जबरदस्ती पढ़ा So this scheme is called Akansha Yojana for the benefit of ST students who are not getting any accommodation. They will be given hostel accommodation because tribal areas रे घरु जीवा आसबा very difficult. अबड़ा scheme हमें सब अबड़ा खाऊ but this scheme is entirely different. ए पूरी को गोटे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोली डिक्लेयर करा जाऊ for this scheme is known as अबड़ा scheme. मैं क्लास रे पढेला बेले मु लिखि दिए मागणा अबड़ा किमा 5 टंगार अबड़ा किमा फर्स्ट 100 गरीब लोगों अबड़ा जहां ऑप्शन रे भी पिला माने टिक मारछन बट अबड़ा स्कीम रिमेंबर नाम इज अबड़ा बट देयर इज नो खाद्य दे वी हैव टू डिक्लेयर इट एट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोरोना पैंडेमिक रे देखिथिबे बहुत लोक माने डरू थिले काले कोन काहा को कोरोना हेतिबो ये हेतिबो किंतु पूरा माने जिगर का टुकड़ा है कि काम करले हमर आंगनवाड़ी वर्कर्स तो अराउंड लक्ष्य आंगनवाड़ी वर्कर्स मन देकी काम करथिबो नै किछि गोटे रिनोमिनेशन ऑनरेरियम दिया हबो दिया हैछि आ एबे मे मासर करंट अफेयर्स कोछि कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आशा वर्कर्स मानकु गोटे स्पेशल सर्टिफिकेट देछि जोथरि कि से माने एप्लीकेबल टू अवेल एनी काइंड ऑफ लोन्स proposed biosphere reserve in India if you'll see the proposed biosphere reserve hello am I audible
Yes, sir. Yes, sir. proposed biosphere reserve तो एटा आंसर होची हमरो सेकंड प्रोपोज्ड बायोस्फीयर रिजर्व इज महेंद्रगिरी तो फ्रेंड्स एथरे कथा कोन कि बायोस्फीयर रिजर्व जो अछि हमें जानि छी हमरो इंडिया रे 18 टा बायोस्फीयर रिजर्व आ 18 टा रो सबटु फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी तमिलनाडु रे हमरो दीटा अछि गोटे नीलगिरी गोटे गल्फ ऑफ ओमान सॉरी गल्फ ऑफ कच्छ तो बायोस्फीयर रिजर्व रु आपन को फर्स्ट ऑफ ऑल तीनटा क्वेश्चन हमको घोषि देबा को पड़िबो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी The biggest biosphere reserve is Run of Kutch. The only marine biosphere reserve, Samudra Kulia, it is Gulf of. Eta konda? Monnar. Gulf of. Mannar. Gulf of. Okay. तो ओडिशा रे हमरो अछि सेमति सिमिलिपाल देखंतो ओडिशा वेस्ट बेंगल आंध्र एसएसएस ओडिशा सिमिलिपाल वेस्ट बेंगल सुंदरबन आंध्र प्रदेश श्रीशैलम बट एबर क्वेश्चन पचरला ओडिसा रे तो ऑलरेडी सिमिलिपाल अछि आ गोटे प्रपोज्ड हे कि अछि सो चांसेस अछि कि सेटा बायोस्फीयर रिजर्व हेई पा तो कोटा सेटा दैट इज कॉल्ड महेंद्रगिरी ओडिसा रे जो पहाड़ अछि सबटु बड़ पहाड़ कोटा देवमाली Devamali. biggest pahada range is Devamali. Okay. So Mangal Yojana, very good news for love birds or love couples. कि इंटरकास्ट मैरिज तुम जदि करबा को इंटरेस्ट तुम प्यार स्ट्रांग अछि तले गवर्नमेंट तुमको प्रोटेक्शन दबो ए स्कीम एबे हमें पढिले एबे काली रो न्यूज़ होची कि दीटा जने लव कपल पुलिस प्रोटेक्शन नै चंदी तंग फैमिली तंगो सपोर्ट करनी ओके सो इंटरकास्ट मैरिज भी करिया को चाहिले तमे गवर्नमेंट रो परमिशन नै परिबो गवर्नमेंट तुमको बैकअप दबो गवर्नमेंट देखियो कि आसी हैरान करूची सो मंगल योजना समस्तंगर मंगल हो प्रेम करू करू जदि फेल भी हे गला पिला ताको भी पास करियार प्रोविजन भी सरकार रखी छंती मिशन 0F F माने फेल सलमान खान रिसीव थ्रेट मिशन 0F F माने फेल तो जदि को स्टूडेंट क्लास रे फेल हे जाउची धन्य 23 होची पास मार्क कि जदि 21 कि 22 रखिला फेल हेला ताको टिके भाई ग्रेस देगी पास करि दिया जाऊ so in border zone of passing mark थिले टिके पास कर दिया जाऊ so that is called mission 0F mission shakti Mission Shakti, this is very, very, very important because depending upon the question, you have to choose your option. Ebe ame patha padle Mission Shakti re amara lekhila kono now for rural women empowerment skill development program by developing self-help groups. So first of all, Mission Shakti, Shakti mane nari. So rural women manankara upliftment by amara Mission Shakti. ए बीपीओडी ऑफिस गंडमुंडा पाखरे बिजू पटनायक पार्क ता ऑपोजिट रे देखिबे मिशन शक्ति ऑफिस अछि सो गोटे क्वेश्चन जदी आसला मिशन शक्ति इज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में अपन को रूरल वुमेन अपलिफ्टमेंट तल आंसर होछि रूरल वुमेन किंतु आउ गोटे मिशन शक्ति अछि दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस मिशन शक्ति सो बट दैट इज आल्सो मिशन शक्ति सो व्हाट डज इट सेज सो एटा हमरो इंडिया तो सेमती सपोज पाकिस्तान तो पाकिस्तान रो भी ऊपर सैटेलाइट अछि इंडिया रो भी सैटेलाइट अछि सो वर्ल्ड रे केवल चारिटा देश अछंती जो माने की मिसाइल छाड़ी की हमें इंडिया भी मिसाइल छाड़ी की पाकिस्तान रो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करि परिबो सो दैट इज कॉल्ड ए सैट ऑपरेशन एंटी सैटेलाइट टू डिस्ट्रॉय द सैटेलाइट इन स्पेस काली युद्ध हेले भी हमें पाकिस्तान और इंडिया युद्ध हेले भी हमें पाकिस्तान को सैटेलाइट पाकिस्तान में जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग करूथिबो जीपीएस दोथिबो ताको हमें डिस्ट्रॉय करि परिबा सो दिस ए सैट ऑपरेशन टू डिस्ट्रॉय एनिमीज सैटेलाइट this is also known as mission shakti we are expressing our shakti power to the world so friends remember question जो भलिया पचारि थिबो ऑप्शन को देखि के आंसर करिवे मिशन शक्ति हम ओडिसा रे related to Odisha upliftment of rural women but simultaneously mission shakti is another scheme another shakti mission of India to carry out destroy enemies satellite गरम तो बहुत होथिबो गछ पत्र लगया कथा सो दैट स्कीम इज कॉल्ड सबुज सबुआडे ओडिसा सबुज ओडिसा 13 कोटी गछ लगा हबो ओडिसा को क्लाइमेट रो कूलर करबा पई सो दैट स्कीम इज कॉल्ड सबुज ओडिसा एबे यूनेस्को ओडिसा रो दीटा सिटीज को डिक्लेयर करची एज सुनामी रेडी स्टेट माने इफ सुनामी कम्स these two cities are ready to take fight and to control the people
इन टेंस सिचुएशन तो जानिया कथा को दिता गोटे गंजाम डिस्ट्रिक्ट रो वेंकटरायपुर आ गोटे जगत सिंहपुर रो नोलिया साही ए दीटा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सुनामी रेडी स्टेट सुनामी रेडी इन कंडीशन क्वेश्चन नंबर 16 very important रोपैक्स जेटी सर्विस रोपैक्स माने रोल ऑन रोल ऑफ माने गोटे जगह रो आ गोटे जगह ये गुड्स नहीं कि जीवो रोल ऑन और रोल ऑफ माने आउथरे पुनी फेरिबो माने हमें जो ट्रेन ने जाऊ फ्लाइट रे जाऊ वर्तमान जहाज रे भी जेटी सर्विस रे हमें बुली परिबा पैसेंजर्स जाई परिबे पैसेंजर सामान फामान भी नहीं कि जाई परिबे तो इंडिया रो प्रथम रोपैक्स जेटी सर्विस कोथरे को रिवर रे इनागुरेट हेची दामरा रिवर फ्रॉम कोनिनाली माने भद्रक टू तळछुआ इज इन आई थिंक केंद्रापड़ा बोलना टू तळछुआ सो रिमेंबर फ्रेंड्स इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंडिया सॉरी ओडिसा रो रोपैक्स जेटी सर्विस प्रथम थर को रिवर रे हेची धामरा रिवर अदरवाइज जेतळे आपण नेशनल वाटरवे पढिथिबे आपण देखिथिबे कि हमर जो बिगेस्ट नेशनल वाटरवे अछि हमर इंडिया रो बिगेस्ट नेशनल वाटरवे होची ऑन गंगा रिवर नेशनल वाटरवे 1 नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र सो लाइक दैट हम ओडिसा रे को नेशनल वाटरवे अछि ओडिसा रे अछि 4 नेशनल वाटरवे ता ना होची 4 आ एटा को रिवर रे अछि ऑन ब्राह्मणी रिवर नेशनल वाटरवे 4 हमर ब्राह्मणी नदी रे अछि माने नदी जो अछि एटा कोठु को जाय जायछि एटा जायछि टालचर टालचर रु वेस्ट बेंगल रो जियो खाई तो कौन क्वेश्चन पहले ओडिसा रो नेशनल वाटरवे केते नंबर रे जायछि 4 नंबर कोठु कोजन टालचर जियो खाई माने इथरे ओनली गुड्स कैरियर दिबो बट गुड्स पर पैसेंजर दैट इज कॉल्ड रोपैक्स जेटी सर्विस व्हिच इज डिजाइन्ड इन क्वेश्चन नंबर ऑन धामरा रिवर क्वेश्चन नंबर 16 गोपबंधु सांबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना सांबादिका माने न्यूज रिपोर्टर्स न्यूज कवर करी करी न्यूज रिपोर्टर माने जो शहीद हे गले कोरोना पैंडेमिक रे जदि फड़फड़ होउथिबे माने हॉस्पिटल रे मरिबा कंडीशन में थिबे 2 लाख मिलिबो एडमिट हेले आ जदि मरि जिबे 15 लाख मिलिबो कैना कोरोना पैंडेमिक रे कोन केमती कंडीशन एक्चुअली रे हमरो न्यूज रिपोर्टर्स भाई माने ही जाय कि सब कहते सो दैट इज नोन एज गोपबंधु सांबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना व्हाट इज द योजना दीस आर द कवरेज मनोज दास लिटरेसी अवार्ड मनोज दास लिटरेसी अवार्ड माने इथरे इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करिया पई केते रिन्यूमरेशन दिया होची 10 लाख टका क्वेश्चन नंबर 19 is a very interesting point of a bluish scheme if you see the full form B for your Bhonsara land use integrated scheme तो एथरे कोन होजी जो जगह दलाल माने अछंती सब जगह रे दलाली करूछंती बट पर्टिकुलरली भुवनेश्वर रे जदि को जगह दलाल को गवर्नमेंट जगह को देखे कि बिके दउची सो गवर्नमेंट जगह को देखि तमे बिके परिबनी और जदि भी बिकेलो डेली अपडेट हमर सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम रहउची सो बाय राडार इमेजिंग दे विल पिक अप केमती जानिबे ना धन्य सपोज हमर चंदकर एमती जंगल पड़ेची तो एठी कोन होची किछि मूवमेंट हला किछि लोक एठी चलिले जोटा रेस्ट्रिक्टेड लोक चलले माने दलाल चले सेटा सैटेलाइट रे मॉनिटरिंग हे गेला सो इट विल हैव ए क्लोज लुकअप सो बाय राडार इमेजिंग प्रोसेसिंग इट विल लुकअप ता माने भुवनेश्वर रे गवर्नमेंट लैंड को मिसयूज करी जो माने बिकुचंदी आउ से माने बिकी परिबे नाही एटा सैटेलाइट सिस्टम रो मॉनिटर हबो दैट मेकानिज्म और स्कीम इज कॉल्ड ब्लूइश स्कीम इंडिया रो प्रथम ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी एटा तमे पढले पुरी and water plus city is again Indore so same thing everything real things will be repeated अमृत स्कीम सबुठ बड़ा अमृत कोन पानी जल ही जीवन है तो अमृत स्कीम माने जो अर्बन सिटीज अछंती कंप्लीटली इथरे वाटर मिलिवा दरकार हर घर पानी हर नल पानी तो अमृत स्कीम रे ओडिसा फर्स्ट हेतला so first position is received by Odisha next question says that कि एबे ओडिसा रा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के चेंज हेचन जस्टिस एस मुरलीधर हमर ओडिसा रा प्रथम आईएएस जे कि एबे गोटे नोआ उपाधि पाइछन द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सो सी इज आईएएस उषा पाढ़ी हमर फोर्थ एबे जो फोर्थ खेलो थर्ड खेलो इंडिया गेम्स हेई परलानी ड्यू टू कोरोना फोर्थ ता एबे हरियाणा रे हवा को जाउची सो क्वेश्चन होची कि हमर प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कोटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स it held in Bhubaneswar
because we are covering some peculiar events of Odisha. Odisha Malati Devi Park Vidyalaya Paridhan Yojana. এটা কোন মানে যে ছুয়া মানে অছন্তি তাଙ୍କୁ দুইটা সেট অফ ফ্রি यूनिफॉर्म दिया ଯିବ for preschool children, so it comes under this scheme. So like that Balaram scheme, Garima scheme, it is related to sanitation workers जो मैंने actually जो नला चौक हेले जो जाए की काम करचंदी ड्रेन पाइप रे, those are manual scavengers, बेले बेले सेमान को डेथ भी हे जाए, so we should not promote such manual scavengers, so there should be elimination of manual scavengers. So जदि सेमान को हमें eliminate करूचे माने से लोक से काम करिवेनी तो alternative तांकर benefit कोन, so तांकर गरिमा कोठी रहबो जदि किछ हमें गरिमा स्कीम करिवा, so alternatively benefit to these scavengers but they will not involve in this manual scavenging. So the elimination of manual scavengers लिखाइला तो सिम्पली जदि elimination of malaria लिखा हो सेटा को इनिशिएटिव एबे में पढितले 2025 इनिशिएटिव आ एबरो करंट अफेयर्स को जी कि एबे पाकिस्तान रे पोलियो को एलिमिनेट करिया पे किछि फाइनेंस सपोर्ट देला बिल गेट्स, so that's why Bill Gates has received recently Pakistan's second highest honor Hilal e Himmat award. देखो पाकिस्तान एबे जे पोलियो जायनी तो ये किछि फाइनेंस कला तो हेतमे त गोटे अवार्ड मिलला, तो बिल गेट्स रिसेंटली रिसीव्ड हिलाल ए हिम्मत अवार्ड टू एलिमिनेट पोलियो इन पाकिस्तान. ओडिशा बलराम स्कीम, बलराम कोन करथिले लंगल रे हळ करथिले, तो जो माने कालिया योजना रे उपकृत होचंदी ठीक अछि किंतु जो फार्मर्स माने तांका पाके लैंड ही नहीं, सो लैंडलेस फार्मर्स, for them what is the government is doing, they have provided some Balaram Yojana or Balaram scheme, so landless farmers will be getting more advantage. निज जीवन बहुत मूल्यवान, घरे रुहो सफा, घरे रुहो सुरक्षित रुहो, so सरकार जेबे कहउथला लॉकडाउन में घरे रुहो सुरक्षित रुहो, that is known as mo जीवन scheme, so requesting people to stay indoors during the pandemic. Mo जीवन माने is important, so we have to stay indoors, so that is in other words is known as mo जीवन scheme. Next one, European Union launches Nirman Shri scheme. So एथर भी कोन ओडिशा और महाराष्ट्र ए दीटा स्टेट हमरो एक भारत श्रेष्ठ भारत रे इंक्लूडेड ऑलरेडी हमें कहि छे, सो एक भारत श्रेष्ठ भारत परे भी वुमेन एम्पावरमेंट किमती बढ़ी पारिबो महाराष्ट्र आम सहित डील करछि, काहेकि ना वर्ल्ड रो प्रथम वुमेन स्किल सेंटर कोठी हेछि ओडिसा रे हेछि, तो ओडिसा रे वुमेन डिप्राइव्ड वुमेन की रूरल वुमेन माने अपलिफ्टमेंट पाउचंदी आ एठो महाराष्ट्र भी टाई अप हला, तो ओडिशा और महाराष्ट्र को टाई अप किए कला फॉर वुमेन एम्पावरमेंट यूरोपियन यूनियन, सो दे हैव लॉन्च दिस स्कीम ऑफ निर्माण श्री स्कीम. तो दीटा जिनस हमें जानिले, यूरोपियन यूनियन ओडिशा महाराष्ट्र को मिसोची फॉर women empowerment, that is called Nirman Shri scheme. Odisha Maharashtra already मिसी के अछंदी एक भारत श्रेष्ठ भारत for cultural heritage exchange. सेच समाधान, जो माने भी फार्मिंग करूचंदी, जो मानकर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ से माने पंचायत जाय की कलेक्टर जाय की समस्त गाडे जाय की मंत्री फंत्री को हैरान करिया दरकार नहीं, सेच समाधान ऐप, एक्ट नहीं एटी ऐप अछि, सेच समाधान ऐप रे जाय करी जहारा जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर, if water is not able to enter to your field, if water is deficient, if there is surplus water you are unable to manage, water related any problem, you have to just report in the app. Within 24 hours your issue will be answered. Resolved kotha guarantee nahi, but your issue will be answered. 5T ओडिसा रे हमरो जो 5T टेक्नोलॉजी को जे 5T मॉडर्न स्कूल्स हेची, तो एमिति क्वेश्चन आसी पारे 5T रे कोन कोन टी अछि, टेक्नोलॉजी, टाइम, टीम वर्क, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी. हमर जो इको रिट्रीट हेतला कि माने जो ओडिसा रे टूरिज्म को प्रमोट करिया पई इको रिट्रीट हमरो को जगह रे हेचे देखंतु, बेसिकली टूरिज्म बढ़िले इकोनॉमी बढ़िबो, इकोनॉमी बढ़िले जॉब एस्पेक्ट भी बढ़िबो, तो कोणार्क, भीतरकनिका, दारिंगबाड़ी, हीराकुद, सातकोशिया. So remember this five, okay, this five are included. So friends, आज तो हमारा फर्स्ट क्लास थिला, एथरे हमें ओनली स्पेसिफिक करंट अफेयर्स किछे देखिले. ए जो चार्टा अछि ओडिसा रा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, दिस आई एम सेंडिंग यू.
एटा मु आपनको ग्रुप रे पे पठे दूची एंड सेकंड थिंग आमे जो ए पोर्शन टा कवर करले कोरोना स्पेसिफिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन सम पेक्युलर इवेंट्स ऑफ कोरोना प्लस एठी हमें किछि वेरियस ऑपरेशंस देखिले दिस ऑपरेशंस यूजीसी रो किछि वेरियस स्कीम्स देखिले अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स व्हाट आर द अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द नेक्स्ट इयर्स आ इंडिया रो प्रथम कोठी आ किए को जगह रे हेची सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ 48 तो आज टिके आपण रिवाइज कर देबे गोटे लुक कर देबे हैना थरे वंस हैव अ लुक नो नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज़ सब डाटा हम पे थिले थरे पढ़ी थिले हम मुंडरे थिबो and some important tips and tricks of latest current affairs तो ए जो पॉइंट उडा अछि थरे एटा आपण पढिबे किछ किछ इंपोर्टेंट दि तीनटा मु कहि देली जेमति फास्टर स्कीम मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क रीनेम्ड हैला तो बहुत सारा जिंस अछि थरे आपण को पढिबा को पडियो सो एवरीथिंग इज गिवन टू यू जस्ट गो थ्रू एंड हैव अ रिविजन in our next class एटा हमरो एक्चुअली जो मंथली कवरेज रे जाउनी एटा फर्स्ट क्लास ता टिके हम एक्स्ट्रा कहिलु बट मंथली कवरेज रे कोन हबो म आपन को एठी कहि दोउची in the monthly current affairs now suppose I pick this question देखंतो एटा जून मासर करंट अफेयर्स टिके डटी एच चली जिवो एटा मु पीडीएफ आपन को पठे देबी पीडीएफ आपण प्लीज टिके प्रिंट आउट कर देबे प्रिंट आउट करके रखे तो एथरे कोन होबो ना सपोज आई विल शो यू दिस क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 38 हमें 38 टा करबा तो 38 रे मते एठी टिके जूम आउट करिकी एनलार्ज करिकी एठी टिके लिखिबा को टिके ट्रबल हबो सो जदी समस्त पाखे क्वेश्चन पेपर थिबो आई विल जस्ट राइट इन अ ब्लैंक पेपर गोटे ब्लैंक पेपर रे मु खाली लिखिबी I will share the white screen. I will just write question number 38. I will write the answer. Some other important points एथरे कुआ हबो से related आउ कोन expected question आसी परिबो so at least गोटे question no 2 3 or 4 or even 10 points भी कोई कुआई पारे depending upon the depth of the question so enter next class को हमें जून मास करिवा सैटरडे जुलाई करिवा संडे so like that every saturday sunday we will be going on covering these events आजिरो क्लास रे जहां भी मु पढे छी मु सेटा आपन को पठे दउछ एठी हमरो recordings भी हला let me close the recording